मैंने कुछ नहीं किया। भाग कहाँ रहा था? हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर दिस इज अ शो सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ अ शो, यू कांट डू लाइक दिस। मैंने कुछ नहीं किया। मूल वृत्ति का मतलब समझता है क्या? इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। मेरा सॉलिड है इंस्टिंक्ट। लेके जाओ उसको। छोड़ नहीं हम, छोड़ नहीं हम, छोड़ नहीं हम, छोड़ नहीं हम, अरे छोड़ नहीं हम। Thank you. If I could, yep. I know हमारे मीडिया के दोस्त के काफी सारे सवाल हैं उनके जहन में जो पूछना चाहेंगे, पर उससे पहले कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूं. How are you? Good to see you. Good to see a lot of familiar faces from the world of media. Thank you so much for joining us here. And इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैं थोड़े सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ा डीप डाइव करता हूं और into the world of सिकंदर का मुकद्दर and get to, पर आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहते हैं कि 60 करोड़ के डायमंड्स किसके पास हैं? It's actually with Ruchika more than anyone else. No, you'll have to wait till the 29th to find out. और उम्मीद है कि मतलब इससे आपको देखते हुए उतना ही मज़ा आएगा जितना हमको इसको बनाते हुए आया है. बहुत अच्छी जर्नी रही है with all the talent that is involved. Some of them are on stage right now and we had a fantastic journey on this one and I'm confident that you guys will enjoy it. Yes, वो कहते हैं सब्र का फल यहाँ पर ब्लॉकबस्टर होने वाला है. Hope so. And you know उसका जवाब तो हमें जसविंदर सिंह देंगे on the 29th of November कि कौन actually किसने चुराए ये हीरे. But नीरज सर, आपकी हर फिल्म में कहानी के साथ साथ कैरेक्टर्स का भी स्पेशल फ्लेवर होता है. एंड मेरा सवाल ये है कि एक हाइस्ट मूवी में एक तरफ एक्साइटमेंट, किसने चोरी की, क्यों चोरी की, चोर को पकड़ा कैसे जाएगा, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. दूसरी तरफ स्टेइंग ट्रू टू द कैरेक्टर्स दैट यू हैव विजुअलाइज्ड एंड कंसीव्ड. कितना मुश्किल या आसान होता है आपके लिए टू मेंटेन दैट बैलेंस? My job, so I don't think that it's a challenge or anything of that sort. When I and Vipul were writing this particular script, it just flowed very organically, and that's a good sign. जब स्क्रिप्ट करते हुए आप किसी भी स्टम्बलिंग ब्लॉक को इनकाउंटर नहीं करते हैं और चीज़ें बहुत आसानी से जो है वो फ्लो में आ जाती हैं, that's a great sign, and that's exactly what happened on सिकंदर का मुकद्दर. And then the only thing that we had to do was cast it right, and I believe that we've cast it just right. The trailer does definitely say it's picture perfect, so yeah, thank you. Thank you. Ruchika, my questions for you. Now this is the second collaboration with Neeraj sir and Friday Storytellers for Netflix. First one was Khaki, the Bihar chapter, which was yet again a super hit. What makes Netflix and you want to collaborate with storyteller and a filmmaker like Neeraj sir? I mean, what's not to collaborate with him? I think the one thing that really sets Neeraj sir apart from a lot of wonderful other storytellers is he genuinely knows the pulse of the audience. In his telling and in all his stories, he's so authentic, he's so deeply local, so true to the milieu that it belongs to. And yet, at the same time, in spite of a lot of the heist and the dishonesty, there is a very clear honesty of a storyteller. And when Khaki, the Bihar chapter, had a phenomenal run, we were very keen that when and if Neeraj sir ever chooses to make a direct-to-digital streaming film, we are the one-stop shop, and we're hoping that we can keep finding space to tell the most wonderful stories that he has at bay. Thank you. And we keep just clicking on to-doom. To-doom, yes. Thank you. राजू सर, मेरा सवाल आपसे है. जी. स्टेज और स्क्रीन के आप एक वेटरन एक्टर हैं एंड आपकी कॉमिक टाइमिंग के तो हम सब फैंस हैं, सो थैंक यू फॉर गिविंग द बेस्ट ऑफ यू. पर इस फिल्म में आप एक अलग अवतार में हैं. फिल्म के दौरान, जो शूटिंग के दौरान आपको कोई यादगार मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? For that matter, every scene I enjoyed as an actor.
since I was working with Neeraj ji for the first time, and we all know his genre and his style of making. तो मेरे लिए एक सीन था जो अविनाश के साथ था जेल के अंदर. हम दोनों हैं जेल में बैठे हुए हैं और I was just thinking before giving the shot. I asked नीरज जी कि मैं बैठ के करूं ये सीन, इस तरह करूं, इस तरह thought process with incomplete lines or searching for words and all. तो नीरज जी ने मुझे कहा कैसे जरा करके दिखाओ. तो मैंने I just enacted and okay. तो this was the thing and I think बहुत बुरा नहीं किया वो मैंने सीन. वो हमें बहुत पसंद आया जो भी हमने ट्रेलर में देखा है और जैसा हम सब कह रहे कब से कि 29 नवंबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा. वी लुक फॉरवर्ड टू इट. इट्स अ नेल बाइटिंग ड्रामा. आप इस तरह फिल्म नहीं देखोगे, आप इस तरह देखोगे फिल्म. एज ऑफ द सीट. So yeah, that's for sure. Thank you, sir. Thank you. Now, Avinash, my questions for you. Now, you played such diverse characters on screen और देखा हमने कि जो मेहनत आप करते हैं हर कैरेक्टर के लिए टू स्टैंड आउट ऑन स्क्रीन व्हेन यू परफॉर्मिंग, इस रोल में ढलने के लिए मेंटली काफ़ी प्रिपरेशन लगी होगी इसके लिए. डिड यू गो विद द फ्लो और डिड यू प्रिपेयर अ लॉट? व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? No, this one especially I felt was more go with the flow. This is the first time I was working with Neeraj sir where he was directing it, and this was something I was really looking forward to get a chance to be on set with him. I think of the limited experience that I have being an actor, I have never met a director who is so quick to take decisions. He's someone who just, he's just on the go. You walk onto set, and by the time you say good morning, good morning, ये shot ये है. It's that, and associate को बोलेंगे कि call, pack up, जब तक हम मुड़ के देखते हैं सर गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं. That's how Neeraj sir is. So when you're on set, you're continuously working. That's the frame of mind. It's a very focused set, and hence for me, this one was something just went on with the flow because he just kept giving the insights into how I take this. Also, the beauty is, and you'll see that in the film, there are a lot of long, steady one shots in the film, which makes the whole process very different because you do long shots. If there is any mistake, you do a retake again, and then you keep going on long again and again. I just felt going with the flow was the perfect way to deal with this film, and I hope once it comes on 29th, people enjoy it. And it's evident in the trailer that we've seen, so wishing you the best. Thank you so much. Thank you. Tamannaah, I was really happy that trailer दो बार play हुआ, believe me or not, because I was looking for that glamorous Tamannaah that we always used to, and then when I met you, I was like, okay, looking like a diva, but it's a surprise for us in a complete de-glam avatar that we've seen you in the trailer and we'll be seeing you in the film as well. So was it a challenge for you? Actually, good afternoon everybody. It's been a while. I've always played different kind of characters, and I think I mostly did them in the in the South Indian films, and I didn't get an opportunity to do it in Hindi films. But when Neeraj sir called me for this, I was wondering, normally तो मुझ पे दिल चुराने का आरोप होता है, but इस बार मुझ पे हीरे चुराने का आरोप लगा है. So I was like, मेरी मूल रीति कह रही है कि ये वाली पिक्चर तो करनी चाहिए. तो उसके बाद मुलाकात हुई अविनाश से, जो कि कह रहे हैं कि बहुत ही उन्होंने of course उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, बट मुझे उनके साथ काम करके लगा कि वो बहुत ही एफर्टलेस एक्टर हैं. इनफैक्ट जब कभी कभार मैं एक सीन में उनके साथ होती हूँ तो मुझे इनफैक्ट रियलाइज़ नहीं होता कि वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, एंड बहुत इंटरनलाइज करते हैं, बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करते हैं. एंड आई हैड whatever screen space I had with Jimmy, I think he is magnetic actually on screen, and I love watching how he can just intimidate without really doing much. So that was fun to watch as an actor. And I have to say, नीरज सर, आपकी जो फिल्में हैं, आपने जो भी स्टोरी चूज़ की है, आपने
उसको कहने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग रहा है. एज एन ऑडियंस हम बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, एंड वी आर वेरी थैंकफुल, एंड आई एम थैंकफुल फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म. ये जो कहते रहते हैं कि जो एक इनका लंबा एक वन शॉट वाला होता है, ये मैंने इनकी काफ़ी सारी फिल्मों में देखा है, बट उसे एक्सपीरियंस करना एक एक्टर के तौर पे मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार था. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड रुचिका, मैं बैक स्टेज थी और मैं आपकी बातें सुन रही थी. आप just validating that you liked what I did means a lot to me. It's very sweet of you. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जिससे मैं बहुत I look up to Neeraj sir, and the fact that he thought of me for this character, it feels great. And राजीव sir और मेरी काफ़ी बनी वैसे हमारे शूटिंग के दौरान. I don't know. वो शाम के 7 बजे हमें कहीं ले जाना चाहते थे, अभी तक लेके हम गए नहीं. ये सारे आरोपी एक साथ हैं. We are hoping आपके प्रमोशन के दौरान थोड़ी मुलाकात हो जाएगी. But I'm glad कि आपकी मूल वृत्ति रंग लाई, and wishing you the best. Jimmy, my next question for the magnetic personality here. Jimmy, congratulations, looking absolutely rugged, dapper. We love the beard look, looking pretty cool. सबसे पहले सवाल पूछने से पहले सारे हमारे यहाँ के मीडिया के दोस्त हैं, उनके लिए वो बायोपिक वाला डायलॉग अगर आप एक बार उसी अंदाज में बोल के दिखाएं, प्लीज. क्या कहती है पब्लिक? यस, सारे डायलॉग आप लोग आज ही इधर ही बुलवा लो. गुड इवनिंग एवरीवन. इन्होंने पहले वो एक्शन में 1-2 डायलॉग उधर ठोकवा लिए, बच्चे कुछ जो हैं वो अभी बुलवा लेंगे, अभी पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी. सो दिस इज आई थिंक तेरी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर, और उसका डायरेक्टर हूं मैं. You were right when you said magnetic. Thank you for impressing us once again. Thank you. Well, आपका जो नाम है, आपका रियल लाइफ नेम है जिमी शेरगिल, उसमें शेर है, और आपका रियल लाइफ नाम है वो जसविंदर सिंह है. जसविंदर, there's win, और शेर हमेशा जीतता है. शेर will definitely win, और हमें यकीन है 29 नवंबर को on Netflix you will help us find out who the ROP is and चोर असली चोर कौन है. बट हमें बताइए कि सिकंदर का मुकद्दर में जसविंदर का रोल प्ले करते वक्त आपने जिमी शेरगिल यानी खुद के बारे में क्या डिस्कवर किया? मैं खुद को डिस्कवर करने के लिए पिक्चर थोड़ा की थी. But while you're in the character, नीरज इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बात अलग है. इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और थोड़ा सा वक्त चेंज होता दिख रहा है. अब दोस्तों ने भी कास्ट करना वापस से शुरू कर दिया है. अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड when obviously when we did औरों में कहाँ दम था, and suddenly then this thing comes up, and I read the script, and I loved it, and then we had a lot of discussions about things and everything and how he was looking at it and all that. And then finally the dialogue draft came, and I was really excited. I said ये थोड़ा और मज़ेदार वाला मामला होने वाला है. और फिर उसके बाद आई थिंक हम सब ने मेहनत की, सब लोगों ने, और बहुत एंजॉय भी किया, क्योंकि एक लंबा सा जब टेक ये लेते हैं जिसके ये मास्टर हैं. मतलब मैंने तो 25-30 सालों से काम किया है इस इंडस्ट्री में, मगर इतने लंबे शॉट्स लेते मैंने किसी डायरेक्टर को नहीं देखा है. तो आप अगर आपके बैक से भी कैमरा जा रहा है तब भी आपको एक्टिंग करनी है, आगे से आ रहा है तब भी, तो उसका एक अलग मज़ा है. बट आई थिंक आई have been working with him since his first film, so मेरे को एक तरीके से एक आइडिया था कि ये कैसे करते हैं. बट उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है. एक सिंगल टेक वाला जो शॉट है उसके पीछे आधे दिन की मेहनत, एंड फाइनली पोस्ट लंच एट अराउंड 3-4 o'clock you crack that shot finally, because he will not okay a shot if even one thing is here or there. So I think वो मेहनत होती है, वो मेहनत सबने की है, and I hope that 29th of November को आप लोग को पसंद आए और on Netflix. यकीनन. और आपने जो जोर दिया डायलॉग्स पर,
हमने जो ट्रेलर में देखा आपके डायलॉग डिलीवरी, तो you've impressed us already and we're looking forward to it. So thank you. We'll be eagerly waiting to ask questions. like Sachin, बस कर लो, हम भी पूछ लेते हैं. So I'll open the floor for media Q&A. मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, before you ask the question, our volunteers will help you with the mic. अपना नाम बताइए, the media house or the publication that you belong to, और किससे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है. तो उस हिसाब से then you can direct the question to the right individual. If I could just see some, yeah. The gentleman in the red. Hi everyone, my name is Shreyas. I'm from the New Indian Express here, Jimmy on your left. My question is to you, Jimmy. You've worked, as you said, you've worked with Neeraj for multiple projects in the past, right from Wednesday to now. How would you exactly describe your working relationship with him in all the films that you've worked? I think आप एक फिल्म करते हो एक डायरेक्टर के साथ, तो आप उसको जब तक वो ख़त्म होती है आप उसको समझना शुरू करते हो. दूसरी फिल्म से फिर जो है वो समझ में आने लगता है. और आई थिंक तीसरी चौथी के आसपास ऐसा हो जाता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, या एक्टर हो या जो भी हो. सो व्हेन he is today, when he gives a script to read, I understand exactly in my head how he's going to shoot it, what this scene is going to be like. So I think that is the fun of it when you worked with somebody over a few films. I think वहाँ पे फर्क definitely पड़ता है. Thank you for your question. Next, if you could raise your hand, if you have the mic with you. I have the mic here. Hi, I'm Tanzim from Filmfare. Tamannaah, to your right, actually. My question is for Tamannaah. And I want to ask you what your experience was working with each of the cast members, because it's such a distinct cast. Everybody's just so interesting. Like I said about Avinash, I don't think if he's prepping, his prep is really, really good. Because on set he just came and he was flowing, and he always had intense. Like there was never a scene in which he's not intense. But you know, intensity is a very interesting thing. Like I don't think many people know how to kind of do that without doing much. And I feel like Avinash does it so effortlessly. For me, that was a great like learning. Just, you know, being in the same frame with him, you know, observing him. That was really, really interesting. And yes, he did take longer than me for his glam. So I'm concerned as to why that happened. And that has remained during the promotions as well. So is this the secret of your beauty? Would you like to answer that? आप मुझे शाम के 7 बजे के बाद मिले, तब बताओ. ये मतलब आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मीडिया जानना चाहती है. अच्छा, ये जब मेकअप उतार देंगे, then he'll give me his skincare. But yes, it was super fun to work with Avinash. Jimmy, we had very little together, but it's wonderful to you know, work with an actor who's actually worked for so many years, has done so many different characters, and is yet feeling fresh. I think we don't credit actors who have a longevity the way we credit just, you know, one successful film and maybe stars that arrive all of a sudden. But I feel like there is a lot of merit in success that's built over a period of time. And Jimmy sir, we love that about you. We love that you've been doing so much different kind of work, and in every time you've given something fresh. So as an audience, we love watching everything that you come up with. And Rajiv sir and I really enjoyed. It was fun. He was my jamming partner. We would have all kind of conversations about food and fun stuff. And he was the one I'd drop my humor bombs on. Yeah, and he kept me like, because बहुत ही serious set था, because नीरज सर की एक खासियत है कि उनके सेट पे सब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है. एंड आप जो हीरे की कीमत बोल रहे हो ना, वो एक मिनट को उतनी अहमियत देते हैं. तो हीरो की जितनी कीमत है उतनी उनके लिए 1 मिनट की है, और 1 मिनट का भी वेस्ट होना उनके लिए हीरे गंवाने जैसा है. So I love that. I love the value for time. And that's why we shot the film in... I didn't even realize. To be honest, I felt like I just went on set, met everybody, you know, had a great time, and the film was done. And
he's a director that makes the job for an actor really simple. Like you really have to just make sure you're prepped and make sure you know everything that you want to do. And I think he's so open, like he's just so open to us coming up with what we feel is, you know, is something that we want to do for the character. At the same time, he has very interesting boundaries for it. So it's the perfect, you know, it's the perfect balance that an actor needs to be able to, you know, do their best. So thank you for making this. And I have to mention Arvind sir. Yeah, Arvind Singh, he's our cameraman, he's a cinematographer, and he's not here today. But I have to tell you, there was a shot. The light was going as usual. The light goes every single day, but it has always felt like the light is going, and that's like the biggest alarm for an actor in a day. And we were just about to run, and I was coming from some other location, going into another location, and chat pe tha ek shot, and everyone is going jaldi. And then I get into the shot, and Neeraj sir wanted me to hit a mark very close to the camera, and I can't see that, so I wasn't very accurate. So I was like, sir, can I have some sandbag? Sandbag ऐसी चीज होती है जिससे आप अपने पैरों को रोक पाओ. So I was like, sir, कुछ मिल सकता है? And Arvind sir, from someone else was handling the camera, he just sat down. I was like, sir, आप क्या कर रहे हो? He's like, no, I'm here to block you. And for me, you know, he just won my heart in a way that it reminds me हम फिल्में क्यों बनाते हैं और हम किस शिद्दत से फिल्में बनाते हैं, क्योंकि फिल्में हमें उस प्रोसेस से प्यार है. And when I met sir, it was just wonderful to see that, you know, we don't celebrate technical crew as much as we celebrate, say, actors. But honestly, these films can't be made by some very strong, insanely strong technical group. So thank you for a wonderful team and a wonderful experience. Thank you, Tamannaah, and you quite literally. Hi. Whoever's the mic, if you can, that'll be great. Yes, hi, right next to you. Hi. Hello. Hi. This is Kunal here from IWM Buzz. Avinash, my question is for you. You know, obviously, it's been a varied, you know, sense of filmography so far, considering OTT and theatrical so far. But you obviously were in, you know, all the news for the right reasons, where Laila Majnu re-released, and you know all the love that it's got now. You played a lovelorn romantic there, and it's been a while. You know, then you've had intense roles in one way or another. So, is there going to be a side of that in one way or another in this one? Is that going to happen? I mean, you're talking about playing a lover again? Yeah, like a lovelorn romantic, you know. So real life में खेल लेता हूँ मैं बहुत. No, but honestly, I mean, it's a great podium to ask this question. Netflix and Neeraj sir are sitting right here. You should put this question to them. I'm always looking forward to parts that I can enjoy and really give my all to. That's what really excites me. So for now, I'm enjoying whatever has come my way. This one is something that I'm sure that people are going to enjoy. Find it very relatable, and at the same time, like he said, it's an edge of a seat thriller, which I think will create an experience which will be different from all the other work that you would have seen of mine. And I hope you enjoy it. So 29th November. Hello. Thank you. Rajiv ji, my question to you here. If you could please rise, then they'd be able to see. If you could stand up, thank you. That way they'd be able to identify. To my left or to my right? Cameramans are behind me, so I don't want to stand up. Rajiv ji, I'll sit down and will ask you. जी, हिंदी में. हिंदी में पूछूं? Okay. राजीव जी, आपके कैरेक्टर्स में हमेशा हमने एक यूनिक प्रेजेंस देखी है आपकी. तो आपका ये जो कैरेक्टर है मंगेश देसाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? And what really accept you to sign this role, and how was the overall working with Neeraj ji? अरे, bottom line is it was a privilege for me to work with दिग्गज जो हमारे डायरेक्ट बैठे हुए हैं, नीरज पांडे साहब. For me it was a privilege to work with him, you know, क्योंकि basically I'm a theatre and television actor. गिनी चुनी 4-5 फिल्में की थी इसके पहले मैंने, जिसके बारे में lesser said the better. This was a special film for me, क्योंकि जो किरदार मेरा है मंगेश देसाई का, very innocent, बहुत सीधा साधा simple innocent आदमी है, 60 साल का, बड़ी शिद्दत से अपने एम्प्लॉयर के लिए he is showcasing diamonds in an exhibition,
And one fine day, he's, there is diamond robbery, and he's turning point है उसकी life में, because he's cornered and he's targeted as one of the convicts, one of the ROP. And despite of all this turmoil, and he stood by this fellow suspects, Kamini and Avinash. So lot many twists and turns in character. And सर मैं जानना चाहता हूँ मंगेश इनोसेंट दिखता है या है? बेसिकली भी हूँ. तो ये माजरा है. ये this is definitely a special film for me. सर आपके जवाब ने हमको ऑलरेडी एज ऑफ द सीट कर दिया, क्योंकि आप इतना बता रहे थे ऐसा लगा था आरोपी अब बता देंगे. बाहर निकलने वाली है. I was like रुचिका is going to go like. Thank you. If you have the mic, if you could raise your hand, and then please. Hello. Hi. Who's asking? Hi, this is Seema here. Hi Seema, on the right. Here, Seema. Yes. Hi. Ruchika, I want to ask you, among the various successful thrillers that Netflix has had, what sets this one apart from the others, and what are the elements that will keep us hooked to this? Thank you, Seema ji, for the question. Many of the elements that will keep you hooked are on stage with me. But I think besides that, in terms of the offering that we've always had, in the year we've had so far, from a very intense film like Sector 36 to Maharaj to Amar Singh Chamkila earlier this year to Haseen Dilruba, when we're finally coming to the close of the year with Neeraj sir's film, the world is very, very immersive. Like all of them have been saying, it's an edge of the seat, and very often we've had films that have certain twists and turns, but the level of immersiveness that one feels when you enter Neeraj Pandey's world is unparalleled. I must also share a very interesting anecdote that when he sent us the script, and it was about 11 o'clock at night, he sent it in the morning, and I got back home, I was like, I'm reading a Neeraj Pandey film tonight, and the last 5 pages were missing. And I had no idea what the climax of the film was, and I texted Devi, and so I was like, I can't sleep, I couldn't, and in my head I had my conspiracy theories, and I was like, this is how I think it's going to end. But the fact that the film had a residue and it stayed with me long after it happened was what I thought really set it apart. He spoke about honesty through the film, about ambition, about greed, and that is what I think sets a Neeraj Pandey film apart from any other thriller that there is out there. Thank you. Tamannaah ji, on your left. Hi. ये आवाज मैं पहचानती हूँ. Hi, thank you. 60 करोड़ के हीरे अगर आपको मिले या मिल जाएं तो क्या करेंगे आप? वही था मेरा जवाब वही था. आप ही के लिए. Actually मैं आपके लिए jewelry बनाऊंगी. अरे मैं. I'd love to make a nice bracelet for you. अरे तो what does jewelry have to do with शादी? उसकी शादी हो कि मेरी थोड़ी नहीं हुई है. मेरी तो नहीं हुई है. तो क्या करेंगे आप? Like मैं ब्रेसलेट बना के आपको दूंगी. अच्छा. Okay, thank you जी. Thank you. नेकलेस पहनता है? ठीक है, फिर नेकलेस बना देंगे. अगर मुझे 60 करोड़ मिले तो मैं नीरज जी को दे दूंगा बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाने के लिए. और अब फिलहाल मेरी मूल वृत्ति कह रही है कि वक्त के मद्देनजर 2 सवाल का वक्त है हमारे पास, सिर्फ 2. So if you could, whoever has the mic, अगर आप. Neeraj Pandey, Lipika here, on your left. Yeah, hi. Your stories are captivating, obsessive and mysterious. So in one line, how mysterious is this? Would you explain? Without revealing the climax. How mysterious? Yeah. Very mysterious. I said one line, not 2 words. It is very mysterious. Anyway, the title is also very captivating. Thank you. Sikandar ka Muqaddar. पर मेरे जहन में मुकद्दर का सिकंदर आ रहा है. आना चाहिए. हाँ. That was the reason why we had this title, because it's a play on a film that I grew up on, loved it, and I think our entire generation sort of loved that film. And it's in a way a tribute, in a way an ode to that
particular film, but nothing to do in terms of genre. Yeah. Okay. Thank मेरी you. मूल वृत्ति, अपनी मूल वृत्ति को टटोल के बताएंगे कि आपके सिकंदर ने देखा है कुछ इसमें से? अपनी मूल वृत्ति का ऐसे डायरेक्टर है कि वो आखिरी 5 पेज नहीं देते स्क्रिप्ट के, आपको लगता है कि उनके अलावा और ये फिल्म किसी ने देखने की जरूरत आपके सिकंदर की बात कर रही हूँ मैं। मेरे तो यहाँ पर सारे एक एक करके सारा मेरी टोली है सिकंदरों की, यहाँ पर किसी ने नहीं देखी है। डिस्कस तो किया होगा कुछ? दिखाने ही नहीं दिया मुझे। कुछ डिस्कस किया होगा अपने सिकंदर के साथ? हम लिपिका, सेट पे इतना डिस्कस कर लेते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती कहीं और जाके डिस्कस करने की। थैंक यू। Thank you, Lipika. Thank you so much. Thank you. Hi, Jagat Sikandar. Yeah, here. Hold on. Who's got the mic? Yeah, One last time for one last question. hi. Hold on. Hi. Hold on. There's a mic already there. I apologize. But I'm going to ask one. Okay, but Yeah. here we have. बताइए नीरज, मेरा एक सवाल आपसे है। आपने शुरुआत में कहा कि आप बहुत सेटिस्फाई हैं क्योंकि कास्ट सही है, तो क्या कभी मिसकास्ट हुआ कुछ? कभी लगा कास्टिंग गलत हुई आपसे? नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक के तो नहीं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट I've come across some brilliant actors in my journey, right from my first film to now. It doesn't matter if they're debuting or they're veterans. The ability to surrender to the material that we are approaching them with, that's what makes these films what they are. So in this case also, I'll just take a moment to share with you guys that we had readings. When people say that it's ek lamba take tha, and we spend time, there's a lot of effort that goes before you land on set. You do readings with your actors, and we had readings with all the 3 of them and Rajiv Bhai individually, and they were really primed and prepped to land on the set and just deliver what's asked of them. And it's only when you sort of are prepared to that degree. अविनाश तो ज़्यादा ही प्रिपेयर्ड होता था, तो वो आके डिस्टर्ब करना शुरू कर देता था लोगों को, बाकी everybody was on their toes. And yeah, that's the reason we managed to make what we eventually managed to make. Thank you. Thank you. We have time for 2 more questions. Yes, please go ahead. Finally, thank you. Yes. मेरा सवाल राजीव जी के साथ है। राजीव जी एकदम सामने देख, इधर। जी, here on the left. ना, थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ। वो कैमरा एंगल। ओके, मैं एक्चुअली मेरा दिल घबरा रहा है कि मैं आपको राजीव जी बुलाऊं या फिर आपको प्रफुल्ल बुला दूं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है आपको प्रफुल्ल बुलाने की। प्लीज राजीव जी। चलिए, मैं आपसे ये क्योंकि प्रफुल्ल क्या है, खिचड़ी लोग बन भी गई, लोगों ने खा भी ली, डकार भी ले लिया। अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म। अरे आपको अभी भी मालूम नहीं, शायद बड़ा है, लोग अभी भी आपके बहुत बड़े वाले फैन, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू फॉर गिविंग सच रोल्स एंड सच प्लेसेस। आपसे ये जानना चाहती हूँ राजीव जी, आपने थिएटर किया है, गुजराती में बहुत बड़ा नाम है, आप खिचड़ी के जरिए लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे में आप OTT प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं, तब आपको OTT में क्या नज़र आता है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है? आपके खुद के नज़रिए से हो सकता है, घर वालों से भी आपको कुछ चीज़ें आपने नोट करता है ना, हर एक्टर वैसा कुछ किया हो। सबसे पहली बात तो ये कि OTT में पहली बार मैं काम कर रहा हूँ OTT प्लेटफॉर्म के लिए, तो मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर लग रहा है, और आई एम हैप्पी टू वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो और क्या, अगर आप इसकी कुछ अच्छाइयाँ आपको जो नज़र में आती हैं पिछले कुछ सालों में? इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं हूँ ये प्लेटफॉर्म पे कि उसकी बारीकियाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो मैं तय कर सकूँ या उसके बारे में कुछ कह सकूँ। लेट मी go ahead more, and then I'll be in that position to say about it. Hi, last question. Yes, thank you for doing that on my behalf. Thank you. Hi, Disha Jasoria from Filmy Gyan. Instincts की बहुत बात चल रही है. Tammy and Avinash, a question for you. Personal life में are you guys very instinctive? Friendship हो गई, प्यार हो गया, क्या आप instinct पे बहुत जाते हैं या is it very practical for you guys? So I ever believe that instincts get shaped up by your conditioning, your understanding and exposure of life, your own opinions, your own. So I think eventually in life you're instinctive, but it comes from your own exploration of life, your own ideas, your own opinions.
मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, but in life generally you ask me, it's my instincts that take over, but there is some thought to it I would like to believe. Tamannaah? I'm extremely instinctive. Like my entire being works on instinct. Sorry, that's मूल वृत्ति. मूल वृत्ति. I think मूल वृत्ति के बिना शायद ही मैं I think मैंने अपने लाइफ के सारे सबसे बड़े डिसीजंस अपने मूल वृत्ति से ही लिए हैं और आज भी ऐसे ही लेती हूँ. And I feel like that's दिमाग आपको क्वेश्चन कराता है, लेकिन अब जब मन में आपको एक आपका मूल वृत्ति आपको एक अजीब किस्म का क्लैरिटी देता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से वो सवाल जवाब करने बैठ जाओगे तो वो आपको यहाँ वहाँ हर जगह ले जाएगा. लेकिन मूल वृत्ति नॉर्मली एक ही बात बोलती है, 2-3 बातें नहीं बोलती. तो that's nicer to trust something that says one thing. Thank you so much. Thank you to all of जी you in the media. लास्ट क्वेश्चन जिमी साहब से मेरा. जी जिमी साहब, हमने आपको मोहब्बत फिल्म में देखा, ए वेडनेसडे में देखा, सब में आपने अलग अलग रोल किए. मेरा नाम शिवली रामपुरी जर्नलिस्ट. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे रोल निभाए हैं, अलग अलग भूमिकाएं की हैं, लोगों को बहुत पसंद आई हैं, तो आपके मन में कोई ऐसा रोल करने का है कि जो आपका ड्रीम्स हो कि मैं ये रोल करूं, वो बताइए आप. है कहीं कोई बैठा हुआ लिख रहा है? अच्छा, कुछ ऐसा लिख रहा है जो उसे पता है कि इसने किया नहीं है, तो अभी जिस दिन वो मेरे तक पहुंच गया वो वही होगा. अच्छा, अभी यानी दिल में तमन्ना है उस रोल को करने की? जी हाँ, बहुत सारी तमन्नाएं हैं. ठीक है, थैंक यू. बहुत सारी तमन्ना है भाई साहब. अभी तो खड़े हुए हैं, डराना बाकी है. फिलहाल हमारी तमन्ना है कि ये गुड कॉप हैं, मैं बैड कॉप बनूंगा. एंड दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर द Q&A. बहुत बहुत शुक्रिया. फोटो ऑफ कोर्स